So hello all, I welcome you all in our next video of Prayer Public School, and this video is for class 8th, right? So today we are again going through the same chapter that we have covered in our last video, that is future tense, right? So if you remember, in our last video we have covered the same chapter and we have completed simple future tense and future continuous, right? So our today's topic is future perfect tense, right? So let's see what is future perfect tense. This is the third subpart of future tense, third main subpart of future tense, that is future perfect tense. So let's see what is it. It expresses an action which is expected to get complete or to be completed at a certain or given time in the future, right? So what it does, it express an action. ये उस action के बारे में बताता है जो कि expected means ये assumption किया जाता है, ये assume किया जाता है कि it will get complete or it will get complete or expected to be completed, right? Expected to get complete or expected to be completed at a certain or given time in the future, right? So ये उन सारे actions के बारे में बात करता है जो कि ये माना जाता है कि एक समय आएगा ऐसा फ्यूचर में कि उस टाइम पे ये एक्शन हो चुका होगा, ना हुआ है, ना हुआ था और ना हो चुका है, बल्कि ऐसा हो चुका होगा, राइट? तो उस तरीके के एक्शंस के बारे में बताने वाले टेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, मैं कल अपना काम कर चुका हूँगा या कल तक मैं अपने साइंस का काम कर चुका हूँगा. तो ये क्या है कि कल अभी आया नहीं है पर आएगा, और कल जैसे ही आएगा मेरा काम हो चुका होगा. तो दैट मीन्स I will have completed my science work by tomorrow, right? तो ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में एक समय आएगा या आता है जब हमारा वो काम कंप्लीट या पूरी तरीके से हो चुका होगा. मतलब वो एक्शन पूरी तरीके से पास्ट में जा चुका होगा, पास्ट में जा चुका होगा, मतलब कंप्लीट हो चुका होगा. So let's see the sentence structure, right? Sentence structure क्या होता है किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. Let's see what is it. Subject will और shall जो कि क्या दिखाता है? फ्यूचर, ठीक है. have which is a rule, और वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो दिस इज द व्हाट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ future perfect is, that is subject will or shall, then have, then verb, what form? Third form of the verb, and then object, right? So let's see the examples. He will have prepared the speech by Tuesday, right? So यहाँ पे लिखा है he will have prepared the speech by Tuesday. इसका मतलब है, अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि ट्यूसडे तक उसने अपनी स्पीच खत्म कर चुका होगा. तो अभी हुआ नहीं है, ना हो गया है, ना हुआ था, बल्कि ऐसा हो चुका होगा. तो इसका मतलब है जब ट्यूसडे आएगा, अभी उसकी स्पीच इनकम्प्लीट है, पर जैसे ही ट्यूसडे आएगा वो अपनी स्पीच कंप्लीट कर चुका होगा. तो चुका होगा इसका मतलब है द होल एक्शन ऑफ preparing the speech is depending upon the certain time which will come in the future, right? So the whole action of completing or preparing the speech is depending upon the time. Time per depend is depending upon a time, or depends on the time which is going to come in the near future, right? And when that time comes, this action will start, and once that time will pass away in the past, the action of preparing the speech will also going to get passed with that in the past. With that means with the Tuesday. That means with the time, right? So he क्या है? He subject है हमारा. Will क्या है? Which is showing the future tense, और ऊपर से क्या है? ये helping verb है, right? Have, which is a rule that we have to put have when we are discussing about future perfect tense. Then prepared is an action verb, and what kind of a verb? That means third form of the verb has been used. The speech is an object, by, and then Tuesday is an adverb of time, right? Or you can say a noun, you can say, right? Because it is also a noun, because it's a name, Tuesday. So he will have prepared the speech by Tuesday. मतलब Tuesday तक उसकी speed खत्म हो चुकी होगी, या prepare हो चुकी होगी, या वो कर चुका होगा. तो अभी हुआ नहीं है, but it will happen. This action, the preparing action of the speech will happen in the future, and it will get completed once the time will expire. Time will expire means once the Tuesday will come, this action of preparing will start, and once the time of Tuesday will go,
that means will go back into the past, the preparing action will also past or will get passed in the past with the time. Time means that is Tuesday, right? They will have completed the project by evening, right? So what if you are going to convert this sentence in Hindi, then क्या मिलेगा कि evening तक उनकी वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे. तो कर चुके होंगे इसका मतलब है अभी हुआ नहीं है, ना हो गया है, ना हुआ था, बल्कि ऐसा हो चुका होगा या हो जाएगा. तो हो जाएगा इसका मतलब है कि इवनिंग अभी आई नहीं है, पर जैसे इवनिंग आएगी ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका होगा या हो जाएगा, राइट. तो अभी से क्या है, अभी से ऐसा हो चुका होगा. तो जैसे इवनिंग आएगा ये जो कंप्लीटेड है, मतलब ये जो एक्शन है कंप्लीट कर किसका, जो प्रोजेक्ट के ऊपर बेस है, दैट एक्शन विल गेट कंप्लीटेड, right, when the evening will passed in the past, right. Evening means that is time which has been mentioned. So what is they? There is a subject. Will is a helping word, right. Have, which is a rule. Then completed, it is an action word. And what kind of a word? Verb third form, right. The project is an object. By, then evening is a you can say a noun because it's a name, right. So they will have completed the project by evening. मतलब evening तक वे अपने project को complete कर चुके होंगे. तो अभी हुआ नहीं है, बल्कि there will be a time will come in the evening when the whole action, this future action will get completed, will get complete, and this will pass into the past, right. So let's see negative structure. अब negative structure क्या है, future perfect tense का वो देख लेते हैं. लिखा हुआ है, is written but not between shall and will and have, right. So हमें not कहाँ पे लगाना है, shall और will जो हम यूज करते हैं, और have, इन दोनों के बीच में shall और will और have, इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, हमें not लगाना है, so that the sentence would be able to express a negative sense. Let's see the example class. He will not have read this book by next week, right. So he will not have read this book by next week. मतलब अगले हफ्ते तक वे इस किताब को नहीं पढ़ चुका होगा. तो पढ़ चुका होगा इसका मतलब है there will be a time in the future, or there's a time when it will that will come in the future, and up till that time the action, what the action we are talking about, reading, right. So he will not be able to he will not be able to do this action when the time will arrive in the future. And what time we are discussing? Next week. तो जब तक next week आएगा तब तक वो इस किताब को नहीं पढ़ चुका होगा. नहीं भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने not लगाया हुआ है. तो नहीं पढ़ चुका होगा, that means there will be a time in the future when this person, that means he, will not be able to do this action, or will not be able to complete this action as per the given time. And what is the given time in the sentence? It is next week, right. So he क्या है? He है हमारा subject, will है हमारा helping word, right. Not, which is giving a negative sense, right. It is giving a negative sense. Then have, according to the rule, read, which is the third form of the verb, right. And it will be read as, it will be pronounced as read. You will not be pronouncing as read, because read gets pronounced, or read, we pronounce read when we say something in the present, right. And when we pronounce something for the past tense, right, we pronounce it read. So have read this book by next week. So read, which is an action word, that is verb third form. This, that means demonstrative adjective, right. Book, common noun. By, the next week, adverb of time. So नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते तक वे इस बुक को नहीं पढ़ चुका होगा, ये मतलब है. दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट, दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मीन्स देयर विल बी अ टाइम व्हेन this action reading will start, but up till that time also, when that particular time which is in the future, it will get passed away in the past. Up till that time also, this fellow means this subject will not be able to complete this action. Why? Because we have inserted not in our sentence, right. So basically the whole sentence is talking about an action which will get complete or which will not get complete in the near future, right.
Let's see the second one. She will not have cooked the food by this morning, right? So she will, that means अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? She will not have cooked the food by this morning, right? So morning मतलब इस morning तक उसने अपना खाना या उसने खाने को नहीं, वो खाना नहीं बना चुकी होगी. तो वो खाना नहीं बना चुकी होगी इसका मतलब है there will be a time in the future when she will involve herself in the action that is cooking, but up till that time also she will not be able to do so मतलब वो ऐसा नहीं कर चुकी होगी. तो अभी ना हुआ है, ना होगा, ना हुआ था, बल्कि ऐसा हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा. नहीं हो चुका होगा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है. तो शी क्या है? अगर शी की बात करें तो शी इज अ सब्जेक्ट, राइट. Will, which is a helping verb, which is showing future, right? Not giving a negative sense. Then have क्या है? According to the rule, right? Cooked, which is a verb, and what kind of a verb it is? The verb third form, right? The food object by this, that means demonstrative adjective, and then morning, it's a noun, right? So she will not have cooked the food by this morning. वह इस morning तक खाने को नहीं बना चुकी होगी. So we are talking about some action that will commence in the future and it will not going to get complete in the future as per the reason why, because we have inserted not, right? So all these like these two sentences of negative structure and these two sentences of affirmative or positive structure under the heading future perfect tense, we have completed it, right, along with the definition. So now you might have understood what is future perfect tense. So future perfect tense, what is it? It expresses an action that will take place in the future, and with that particular time or during that particular time it will get completed. Why? Because we have written perfect, and for perfect is nothing but a word that shows all the time that has passed into the past, or it will get passed into the past. So it expresses an action that will get complete or that will get completed in the future after a certain period of time or during a certain period of time in the near future, right? Class, let's see the interrogative structure of future perfect tense, right? Let's see what is interrogative structure. Shall and will, or shall or will comes before the subject and have follows it, right? So interrogative structure क्या होता है future perfect tense का? कि shall और will जो हम use करते हैं future के लिए वो subject से पहले आ जाता है sentence में, और जो have रहता है वो उन लोगों को या इन दोनों words को follow करता है, मतलब उसके बाद लिखा जाता है. Right? So let's see the example. Will the school have gone for picnic by the next week? Right? So will the school have gone for picnic by the next week? That means यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या स्कूल अगले हफ्ते तक पिकनिक के लिए जा चुका होगा? तो जा चुका होगा इसका मतलब है it depends on a time when the action of going will take place in the near future. मतलब अभी हुआ नहीं है, ना हो चुका है, ना हो चुका था, बल्कि ऐसा हो चुका होगा, मतलब ऐसा होगा, पर कहाँ होगा? फ्यूचर में. तो वही ये पूछ रहा है कि will the school have gone for picnic by the next week? क्या नेक्स्ट वीक तक स्कूल जो है वो पिकनिक के लिए जा चुका होगा? तो जा चुका होगा, दैट मीन्स द एक्शन टोटली डिपेंड्स on the future. When that time will come, the action of going for the picnic will start, and it will get completed when the next week will over, or when the time for which the picnic has been decided by the next week, when that time will pass, the action will itself get passed in the past. That means it will fall under the category of perfect, right? So will the school have gone for picnic by the next week? So you can see what is it? Will, that is a helping verb, and it is also acting as an interrogative word, because this is the word only. This is the word, or only this is the word which is helping us in asking a question, right? The school is the subject, right?
have, according to the rule, gone, which is the action verb. And what kind of an action verb? Third form of the word. For preposition, picnic, object, by, that means again preposition. Then the next week is the adverb of time along with the article, right? And in the last you can see I have inserted one thing, that is a question mark. Why? Because it is an interrogative sentence. So will the school have gone for picnic by the next week, right? Let's see the second one. Shall I have written this novel by the next month, right? So shall I have written this novel by the next month, इसका मतलब है shall. अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि क्या मैं अगले महीने तक इस नॉवल को कंप्लीट कर चुका हूँगा. तो इसका मतलब ना हुआ है, ना हो गया था, ना अभी हो रहा है, बल्कि क्या ऐसा हो चुका होगा. तो ये टोटली डिपेंड कहाँ पे कर रहा है? फ्यूचर में. दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ. इसका मतलब है नेक्स्ट मंथ आएगा जब ये राइटिंग का एक्शन शुरू होगा, और नेक्स्ट मंथ जब लास्ट डे रहेगा उसके होते होते उसका नॉवल अगर कंप्लीट हो चुका होगा या कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो डिपेंड करता है. दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑन द टाइम, राइट. तो यहाँ पे है shall I have written this novel by the next month. So next month it is a future time, right? And इसका मतलब है ये कहाँ की बात कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ आएगा. तो ये राइटिंग का जो नॉवल जो राइटिंग है, ये एक्शन, ये इसकी शुरुआत होगी. और जब अगले महीने का, जब नेक्स्ट मंथ का आखिरी दिन होगा, क्योंकि वही आखिरी दिन होगा, उसके बाद ये जो समय हमें दिया गया है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ टाइम, जो हमें समय दिया है वो कहाँ पे चला जाएगा? पास्ट में. अगर ऐसा हो चुका होगा या अगर नॉवल राइटिंग का काम अगर हो जाएगा तो दैट मीन्स इट विल बी अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगर नहीं होगा तब हम वहाँ पे नॉट लगा के एक्सप्रेस करेंगे, राइट. So basically, I mean to say that this writing, the action of writing will take place in the near future, right? And whether it will get completed or it will not completed, it depends upon the time, right? So shall I have written this novel by the next month? That means shall क्या है यहाँ पे? ये है helping verb, right? ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये shall और किस तरीके से काम कर रहा है? Interrogative word का. Why? Because it is asking question. I being a subject, have, which is according to the rule, written, which is an action verb. And what kind of an action verb? It's a verb third form, right? Then ये demonstrative, adjective, right? Novel, which is a noun, right? By preposition, the next week, adverb of time, right? And again, I have inserted or written a mark, that is a question mark. Why? Because again it is a question or interrogative sentence, right? So class, with these two sentences we have covered the interrogative structure of future perfect tense, right? So class, let's see the four main subpart of future tense, that is future perfect continuous tense, right? So let's see what is it. It expresses an action, right? It expresses an action that will have been going on, that will have been going on at or before some given point of time in the future, right? So future perfect continuous tense क्या बताता है? ये उन actions के बारे में बताता है जो कि future में हो रहा होगा, ठीक है, at a given और before some point of time. मतलब या तो समय से, जो समय दिया हो उस समय पे चल रहा होगा, या एक समय दिया हो उस समय से पहले वो चल रहा होगा. कहाँ पे? फ्यूचर में, राइट? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट एक्सप्रेस एन एक्शन, ये उन एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा. ऐसा कर रहे होंगे, या ऐसा बोल रहे होंगे, या ऐसा खा रहे होंगे, या ऐसे चल रहे होंगे. इन सारे एक्शंस के बारे में बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? तो इसका मतलब है ये है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कल सुबह दिल्ली के लिए जा रहा हूँगा, तो दैट मीन्स ये जा रहा हूँगा कहाँ की बात हो रही है कि कल जब सुबह होगा तो मैं क्या होगा, मेरा ये एक्शन, क्योंकि कल सुबह से एक्शन, ये जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है वो क्या है? कल का है.
तो कल होगी तो मैं सुबह तैयारी करूंगा या तैयार रहूंगा कहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, राइट। तो कल जा रहा हूँ, इसका मतलब है माई एक्शन ऑफ जर्नी और माई एक्शन ऑफ ट्रैवलिंग विल टेक प्लेस टुमारो। तो ऐसा कल जब आएगा तो ऐसा हो रहा होगा, राइट। एंड व्हेन आई विल स्टार्ट माई जर्नी, द जर्नी विल कंटिन्यू up till the time I'm not going to reach Delhi. So that means कल की अगर बात करें तो क्या है, फ्यूचर है, राइट। और उसके बाद जब मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करूंगा तो वो जर्नी कॉन्टिन्यूस रहेगी जब तक कि मैं दिल्ली नहीं पहुंच जाता, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और फिर एक समय आएगा जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो दिल्ली पहुंचने के जैसे दिल्ली पहुंचूंगा उससे पहले वाला समय कहाँ जा चुका होगा, पीछे जा चुका होगा, मतलब परफेक्टली पास हो चुका होगा कहाँ पे, पास्ट में। तो वो सारा टाइम कहाँ पे आ जाएगा, वो सारा समय जो पास्ट हो चुका होगा पास्ट में, वो आ जाएगा परफेक्ट की कैटेगरी में। तो दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। तो ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो फ्यूचर में एक समय पे स्टार्ट होगा, कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, और जैसे वो समय एक्सपायर होगा वो भी कहाँ पे चला जाएगा, वो एक्शन जो है वो भी कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। दैट मीन्स द टाइम एज वेल एज द एक्शन विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल have been going on, मतलब पहले तो continuously चलेगा, that will, और will कहाँ पे, फ्यूचर में, मतलब कहाँ पे continuously चलेगा, फ्यूचर में, that will have been going on at or before some given point of time in the future, right। और जब वो समय एक्सपायर होगा, एक्सपायर मीन्स पास्ट में जाएगा, तो जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है जब वो पास्ट में जाएगा, तो जितना एक्शन का समय होगा टोटली जो कंटिन्यूसली था अभी तक चलने के बाद तक, वो भी पूरा का पूरा कहाँ पे फॉल हो जाएगा, परफेक्ट में, राइट। सो दैट इज व्हाई ओवर हियर इट इज आल्सो रिटन परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। सो लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो होता है आपका सब्जेक्ट, देन विल और शैल प्लस हैव बीन, राइट। और ये बीन क्या दिखाता है, ये बीन आपको परफेक्ट दिखाता है, राइट। देन वर्ब कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। वर्ब वो भी कौन सा, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल 1, the students will have been solving the sum since morning, right। तो the students will have been solving the sum since morning, अगर इसकी बात करें तो क्या होगा कि मॉर्निंग से जो स्टूडेंट हैं वो अपने सम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो कर रहे होंगे इसका मतलब है अभी वो समय आया नहीं है, पर जैसे ही मॉर्निंग आएगा तो ये सारे स्टूडेंट्स अपने सम्स मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे मैथ्स प्रॉब्लम्स होती हैं आपके, मैथ्स क्वेश्चन होते हैं, वो सम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी फ्यूचर, अभी मतलब मॉर्निंग आया नहीं है, जैसे ही मॉर्निंग आएगा ये सॉल्विंग जो एक्शन है हमारा वो स्टार्ट होगा, कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, ठीक है। और एक समय मॉर्निंग, जब तक मॉर्निंग नहीं खत्म हो जाती तब तक ये क्या होगा, ये ऐसा कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द सम सिंस मॉर्निंग, राइट। तो मॉर्निंग आएगा, मॉर्निंग के जैसे मॉर्निंग शुरू होगी उनका ये स्टूडेंट्स का जो सॉल्विंग वाला एक्शन है वो भी स्टार्ट होगा, फिर वो कॉन्टिन्यूस भी रहेगा टिल द होल मॉर्निंग इज नॉट गोइंग टू एंड, राइट। And once the morning will end, that means the action will end, and both the time, that is morning time, as well as the action, that is solving action, will pass into the past. And once these both the things are going to get passed in the past, it will fall under the category of perfect, right? और slowly and gradually जब मान लो कि मॉर्निंग चल रही है, धीरे धीरे चल रहा है, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, तो इनका सॉल्विंग है एक्शन वो भी समय के साथ पास होता रहेगा। तो उस हिसाब से भी आप मान सकते हो कि समय के साथ साथ जो सॉल्विंग एक्शन है वो उस टाइम पे भी कहाँ जाता रहेगा, परफेक्ट में, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम विच इज पासिंग इन द पास्ट with the action, right, with the action that the person is involved in doing, is actually falling where it is actually passing in the past. That means every single second, every single action, right, which is passing in the past is automatically falling under the category of perfect, right? So future perfect continuous tense. So the students will have been solving the sums since morning, मतलब सुबह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सम्स को, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, दैट मीन्स एवरीथिंग इज लाइंग इन द फ्यूचर। Second, the players will have been exercising for 2 hours, right? तो जो प्लेयर्स हैं वो 2
घंटे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इसका मतलब है जब भी वो 2 घंटा जो भी ऑथराइज टाइम है 2 घंटे का, मान लो मैंने कल उनको 2 घंटे सुबह 7 बजे से 10 बजे या 8-9 बजे तक उनको बोला है कि आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो अगर मुझसे इन प्लेयर्स के बारे में कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ कल 2 घंटे या आने वाले कल के 2 घंटे में सुबह के टाइम में वो अपने एक्सरसाइज, ये प्लेयर्स अपनी एक्सरसाइजेस या एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो कर रहे होंगे इसका मतलब है एवरीथिंग इज लाइन इन द फ्यूचर। दैट मीन्स दिस एक्शन, एक्सरसाइजिंग एक्शन विल टेक प्लेस in tomorrow, right? That means future. Then it will continue. वो कर रहे होंगे तो इसका मतलब है ing form of verb का यूज आया है, कर रहे होंगे इसका मतलब है ing form of the verb है, that means continuous। और इसी 2 घंटे में कुछ समय पास्ट में भी चला जाएगा तुरंत, किसके साथ साथ, एक्शन के साथ साथ। तो वो समय कहाँ पे आ जाएगा उस एक्शन के साथ साथ, परफेक्ट में, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो द प्लेयर्स विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours, मतलब कल मॉर्निंग में वो 2 घंटे से, ये जो प्लेयर्स हैं वो 2 घंटे से अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो कर रहे होंगे दैट मीन्स इट विल, द एक्शन ऑफ एक्सरसाइज विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, राइट, एंड इट विल कंटिन्यू एज वेल। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम of that particular rest of the time of this particular time will immediately or will continue going will continue going to take place in the past. Going to take place in the past means it will continue passing in the past, and that passing time in the past will automatically going to get fall under the category of perfect, right? Let's see the sentence structure, negative structure of future perfect continuous tense. तो negative structure क्या है ये देख लेते हैं। Put not हमें लगाना है कहाँ पे, will और shall and have been के बीच में, right? तो put not between will and shall and have been। अब have been है, जैसे for example यहाँ पे have been है और will, तो इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे क्या लगाना है, not का यूज करना है। तो वो जब नॉट का यूज करेंगे सेंटेंस में तो एक्सरसाइज क्या, अरे नेगेटिव सेंस हमें ये सेंटेंस बताएगा। देखते हैं, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन बाय द इवनिंग, राइट। तो द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन बाय इवनिंग का मतलब है क्या हुआ कि जो बच्चे हैं वे गार्डन में खेल नहीं रहे होंगे इवनिंग में, ठीक है। तो इवनिंग में जो इवनिंग मतलब गार्डन में ये जो बच्चे हैं वो ये बच्चे हैं गार्डन में इवनिंग के टाइम में खेल नहीं रहे होंगे। तो खेल नहीं रहे होंगे इसका मतलब है टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर, राइट, दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग विल नॉट बी हैपनिंग इन द फ्यूचर और इट विल नॉट बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो और नॉट लगा है इसलिए क्या बता रहा है, ये नेगेटिव सेंस बता रहा है। तो द चिल्ड्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है विच इज शोइंग द future time, right? Not क्या है, giving a negative sense, have been which is a rule, playing which is an action verb, and what kind of an action verb, ing form of the verb, in preposition the garden, object by preposition the evening, you can say adverb of time, right? So the children will not have been playing in the garden by the evening, मतलब garden में बच्चे शाम तक या शाम को ऐसा नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कर रहे होंगे मतलब ऐसा मतलब खेल नहीं रहे होंगे। तो खेल नहीं रहे होंगे इसका मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट सम टाइम व्हेन और इन विच द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, राइट। दूसरा देखते हैं, दे विल हैव बीन, दे विल, यहाँ पे नॉट लगेगा, they will not have been cycling for an hour by this afternoon, right? So they will not have been cycling for an hour by this afternoon, मतलब इस दोपहर तक, right? वो लगभग 1 घंटे तक साइकिल नहीं चला रहे होंगे, मतलब उनको 1 घंटा नहीं हो पा रहा होगा या हो रहा होगा क्या चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, कब तक, इस आफ्टरनून। तो इसका मतलब है ये कहाँ की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट future action that is not going to continue till till an hour, right? So they will not have been cycling for an hour by this afternoon, मतलब इस आफ्टरनून तक उनको 1 घंटे नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हो रहा होगा साइकिल को चलाते हुए। So again this sentence is talking about
future perfect continuous tense. Now let us see they, which is a subject, will, helping verb, right, which is expressing future, then not giving negative sense, have been, which is a rule, then cycling, action verb, which is an ing form of the verb, for, preposition, and article, are, it's a name you can say, by, then preposition, this, that means demonstrative, adjective, right, and this afternoon is a, you can say, is a noun, right. So they will not have been cycling for an hour by this afternoon. So class, with these two sentences under the heading negative structure and with these two sentences under the heading affirmative sentence structure, along with the definition, we have covered the topic or completed the topic future perfect continuous tense. Thank you class.